congratulations. Oh yes, I remember. और मेरे भाई का And भी. even Viraj is good. Correct. The better brother. Yeah. Better half. His better half has shown up from London. लोडी पे ही आ गई थी. Wait, is he home? He's in अबे, town. वो मैड्रिड में है. वो पहुंच अच्छा, गई. she reached वो Madrid. लोड़ी पे आ गई थी तो ऐसे बोल रहा था, मेरे को लगा कि दिल्ली आई है लोड़ी नहीं, पे. नहीं. लोड़ी बता रहा है कि वो स्पेन पहुंची है. नहीं. मुझे जुलाई में लाएगा उसको, मेरे को लगा है. बट क्या कहते हैं, हाँ वो पहुंच गई थी जुलाई में लाए. लोडी Where पे. he's in Spain, right? He's in Spain, she's in London. Okay. बट वो पहुंच गई उसके पास. एंड लोडी पे ऐसे तो हम आग जला रहे हैं, फोन पे ऐसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, घर से हम तीनों बैठे हैं. और ऐसे 2-4 मिनट के बाद ही कहता है माय व्हाट्सएप वीडियो कॉल है. बड़ा ढेर सारा समझ रहा अपने आप को. कह रहा माय फोन बैटरी इज लो, आई एम गोइंग. हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं. हम तीनों को पता है कि व्हाट्सएप तो बताता है देयर फोन बैटरी इज लो, है ना. Right, WhatsApp right, दे right, देता है right. notification. तो अब तीनों देख के हंस रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है चल जाने दे उसको. तीनों कौन है? मैं, मॉम, डैड. हाँ अच्छा. ये उसकी 3 लड़कियां. 2 लड़कियां इसकी. 2 out of the 5 that he's seeing right now. सब लोडी में आ गए थे मेरे घर. सब सब एक साथ भुट्टा लोडी इज अ कम्युनिटी सेलिब्रेशन. डालते क्या है आग में लोहड़ी में? क्या क्या चीजें? आई नो Popcorn, पॉपकॉर्न. मूंगफली and रेवड़ी. and yeah. रेवड़ी. रेवड़ी क्या है? Revdi is essentially sesame seed and good ओके. का उसका बनता है. It's tasty. स्नैक मिठाई. Yeah. It's tight. So do you eat it from the fire later? अरे Yes. थोड़ा खाओ, You थोड़ा roast it. फेंको. अरे not from the नहीं, fire. होता क्या है तो you take the लोड़ी का बारबेक्यू थोड़ी चल रहा है यहाँ पे. एक बड़ा सा पंजाबी है तो बस. बड़ा सा भांडा होता है एक. ठीक है, उस भांडे में भर दो. ठीक है, भांडा बर्तन. हाँ. Okay. You fill it in, you go towards the लोड़ी. And then एक अरदास करते हो. You go towards the Lodi is the fire. the fire, right? No, it's the It's village. the festival is Lodi. It's the girl you don't like at the village. What? Lodi. लोड़ी is early. Okay. It's a lot of Yeah. हाँ. Okay. बहन की लोड़ी. Yeah. Hmm. माँ की लोडी. हाँ. ये पूरी कम्युनिटी की होती है. कम्युनिटी की लोड़ी होती है. हाँ. In any case. So एक you होती है, go हर गाँव में there. चुनते हैं एक. Now there is an ardas which is the Sikh prayer. एक करते हैं वो. Yeah. उसके बाद the snacks get converted to prasad. अब प्रसाद बन गया क्योंकि प्रेयर बोल दी एक. अच्छा. हाँ, उसके आसपास बोलते हैं ना तो वो वाइब्रेशन से हो जाता है. Correct. You chanting intonation बोलते हैं, उसके Okay. बाद बन गया वो तो प्रसाद. आग लगती है, everyone फिर then vibrates. हाँ, then you and can then- eat it. Then you eat it. You go 7 rounds around the fire. Then you fucking throw it in there also in the middle. So it's like a wedding. And then 7 पंडित जी rounds. कहते हैं शादी संपन्न हुई. You're marrying the crop harvest. You're married to this harvest. कि हाँ इसी से मेरे को. ऐसा पता है कुछ नहीं होता है. मैं तेरे तो को सोच रहा full हूँ. चूतिया बना. You 6 चीजों में से 2 चीजें होती शायद. नहीं नहीं अरदास होता है और खाते हो और फेंकते हो. That's it. So it's just a Sikh thing. It's not a Hindu thing. No, It's a Punjabi. It's a thing. Punjabi thing. It's a cross culture. Even मुसलमान भी लोहड़ी मनाते हैं. मतलब तो जैसे it's a Punjab जैसे कि culture thing. हम लोग It's a अरदास farmers करते हैं. festival. Sabarmati. Farmers festival thing. हाँ. It's not a religious thing. But it is I a mean, Punjabi festival. yes, It is a that's what I'm Punjabi saying. festival. So former Punjab, Haryana and Himachal still celebrated, Okay. and Punjab of course, and Delhi of course, because Delhi is Is Punjab. Punjab. Is Punjab. Basically. Yeah. That's All the good parts. are- Except Siabag. the one small Bangladesh you've got going there. ठीक है? Little Bangladesh they call it. Correct. Little Italy होता है. निजामुद्दीन हो गया Little छोटा ढाका. निजामुद्दीन हो गया छोटा पाकिस्तान उसी के पास. तो ये सीन होता है होली पे. एकदम. होली पे. Yeah. By Bang the way, होली. I did that even on Lodi. मैं जाकर happy Holi बोलते थे घर पे की fucking रहा. All of these things mean nothing to me. Like like. हाँ, तू कौन सा farmer है? Correct. है ना? I don't eat grain. Yeah. Your back wouldn't allow you to be. I mean, I could ride a tractor. I think it's a cool look To ride a tractor. But what is the story? in the city, on roads, not in the farm. Then it's what else are you going to do? Wait. But if I'm pulling up to Emporio in a fucking tractor, bruv, That'll, yeah. you'll get I know, उसी का चाबी तो दे वाले को. ये ले भाई तू लगा ले. लगा दे. you'll get some looks. महिंद्रा बनाएगी नेक्स्ट. You'll get some looks, dude, yeah. महिंद्रा ही बनाएगी नहीं और क्या. बी सेक्सी के बाद वो सिटी ट्रैक्टर वाला एक बना देगी. Bro, Mahindra के जो rocks निकल गए ना, Thar rocks, अब उसको up can only be an actual tractor to drive on the streets to just show how much of a fucking. But the two electric cars are apparently very good that they came out with. Yeah. electric, so they've been doing a good job with the electric. Which ones are you talking about? Now This the B sexy. isn't that the Tata though?
No, that's वो महिंद्रा Mahindra. Oh, Mahindra है. तो टाटा की कौन, टाटा की भी तो क्या है Tata की Curve. कर्व ईवी, राइट, कर्व ईवी, Curve. CURVV EV, Yeah. Curve. Oh my कर्वी god. EV, Curve. कर्वी EV. Yeah. Oh, that's probably what it is. Curvy EV. Probably. Curvy. Oh, It's terrible. that's disgusting. All of these names, B6E, and the B6E is also very No, like, no, B-Sexy also they went through some court cases क्योंकि Indigo filed a case against them कि भाई हमारे 6E, flight हाँ. 6E cut it so now it's B6. oh, They had to change the Yeah. name of the car. B6. It's B6. B6. that's just fucking retarded anyway, dude. I mean, just to think that you could imitate Elon Musk, because that's what he did, na? Tesla Model X, sorry, Hmm. Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X, Tesla Model Y. That's Wow. how he released his cars. Hmm. तो sexy बनाता हूँ, हाहा मीम. उसके बंदे का पूरा सीन ही है कि मैं धंधे मीम पे चलाऊंगा. I'm going to buy, take Twitter private at 420 a share. Oh, stock goes up, all of that, लटरम पटरम लोड़ा. वो बंदा यही, उसका सीन ही पूरा ही है. डोज कॉइन कि मैं मीम पे भैंचो इकोनॉमी चला दूंगा Yeah. पूरी. तो अब अपने यहाँ पे बैठ के टाटा महिंद्रा को लग रहा है कि वो भी करेंगे ऐसे थोड़ा बहुत है. कर्वी, Make in but at India. least Curvy is a little bit better, you know, at least it's litigation proof. Yeah. But B60 तो they just bungled the hit, bro. But there's also They bungled the hit. B9X some shit which is apparently without. पूरा खराब ही हो गया ना फिर. B9X, Yeah, or 9 something. There's a 9 in it. It's slightly bigger than the B6. 9 cat. 9 gag? Nyan- Don't you remember 9 Why gag? that rainbow farting thing? Don't you remember 9 cat? Right? 24 hours of 9 cat. It used to be 9 cat, right? Yeah. NYAN. तुम्हें याद नहीं है क्या? नहीं. बता रहा हूँ. लोड़े सुनाऊंगा, बताऊंगा क्या सुनाऊंगा भाई. मैं बता तो रहा हूँ. तू क्या बताएगा? अबे वो जो बिल्ली पाद मारती रेनबो. But do you know the song? कुछ कुछ याद है. Oh, fuck me. Okay, yeah. She just goes on for hours. क्या भांगड़ा टैग होगा ये. That way, I guess they could do that, huh? इसको तो असली मजा आ रहे हैं. हाँ. तू रैप कर दे भाई इस पे. Call कर क्या मुझे बोलती इसको. पब्लिक. क्या बोलती बोले ये लेट अस क्या नो इन द बोलती कमेंट्स. public? सही लोड़ा बताएंगे भैंचोद. एक पोल डालो उसमें 8 वोट आते हैं. Fucking just try to get a sense of तो बाकी लोग अनसब्सक्राइब कर ले. fucking who they बहुत हो listen- गया भाई. it's listen, we don't even know who's watching, you know. Because this subscriber numbers don't match up and you know who's watching, but it's fine. Like I don't care enough. I thought because we were contemplating, do we do another episode, etc. Thought let me put out a poll. 8 responses, but people say yes, one more episode. Put out a poll where? Put out a poll on the YouTube. Ah. So on YouTube you can do a poll as a community post, that kind of thing. Okay. We did that, but You did for today's extra जो हम बैठे हैं. no, not for today's extra. Fucking I put it out last. Oh, for I put it on Saturday. for twice a week. In general, yes. And I think it got 8 responses last I checked, which was like a fucking. couple That's days. encouraging. 8 out of 8 out of 250. 249. So But from that 8, 6 of them said yes, 2 said no. Oh, So okay. 75-25 split, उसमें सही है. मैं कह रहा हूँ माँ चुदा है, हमको नहीं करना. You know, the response is overwhelmingly they want us to do it. Overwhelmingly, statistically. But correct. 75%. 75%, dude. Of our polling according audience. to the polls. But yeah, set a timer for 6 minutes, bruv. How you gonna get your coffee ready, dog? Yikes. Thank you, Nikhil bhai. Anyway, so what's happening in the city, Set a man? timer for ये 6 election हो रहा है भैंचोद. मैं आज ना और मैं आज थोड़ा सोचा जल्दी निकलूंगा. I want to beat because you cross this Green Park Road. The 10:30 onwards is full of traffic. तो मैं आज 9:30 निकलूंगा घर से. हाँ. भैंचोद आज ट्रैफिक मिल गया. क्यों? बीजेपी के ट्रक लगे हुए हैं सारे वो. Ah. Yeah, I भैंचोद ऑटो भरे हुए हैं. 12 ऑटो लगे हैं जिसमें वो तेरा ऑरेंज लगा है. Ah. ऑरेंज हुडी में भैंचोद ले लौंडे घूम रहे हैं उनके सड़क पे, blocking the fucking streets. This guy is blasting from his truck. That crap music that they come out with every election, there's some music they have to blast. Why do they think they have? Do you think? I mean, With the anthem with like Kailash Does Kher it voice or work? something.
It must work It because must work it for the must masses. work. It does work. It fuck me, dude. I was like, where am I stuck? भाई What तू do I यहाँ do? रिकॉर्ड करा ना अरमाज्ड में इन लोगों को, रो क्या रहा है? ये गाने तेरे यहाँ बने तो इतना अच्छा होगा। वो ठीक है, सुनना नहीं मेरे को। रिकॉर्ड जा करने, रिकॉर्ड करने आ जाओ, रिकॉर्ड करने आओ, ये सब वो सब करो। But fucking don't fuck me up, dude. Like I was sitting on, I was stuck on one spot for 10 minutes. Fuck. Anyways, so that's the election stuff happening. तुम्हारे सीआर पार्क में होता है क्या ये सब? हाँ। बंगाली गाने बजते हैं क्या? कोलबो लोडबो जीत करबला वजीद वरे। with Lotus. कोरबो Yeah. लोरबो जीतबो का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होता है? करूंगा लड़ूंगा जीतूंगा। करेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीत के, ये कोलकाता नाइट राइडर्स का गाना पता है है पता है। हाँ। अच्छा। जीत बोरे वो गाने में ही गाता है जीत भाई, बोरे। समझाता है वो आदमी। हाँ। अरे मुझे इतना ही आता है। ममता भी तो गा देती है। ममता गाती है उसमें? ममता भी गा ममता तो देती है। बहुत चीजें ममता गाती भी चढ़ ब्रो ममता apparently in any cultural functions where she is invited she gets up on stage and starts singing in Singing or Kolkata. play एक And बार no, and she can't sing by the way. But Keyboard no one बजा- can tell her to get नहीं the पर fuck उसके off stage. वीडियोस भी हैं कि वो कीबोर्ड बजा रही है, गाना गा रही है, ये सब है, मतलब these The exist। problem is that nobody can tell her she can't sing, so she thinks she can. Yeah. Unfortunately, Nobody has the balls to tell her, bro. Fucking can you in imagine? West Bengal. I'll tell her. ममता जी, दीदी, दीदी आपको म्यूजिक टीचर चाहिए। लिसन, आपको गाना नहीं आता और आप कोशिश भी मत करो यार, तुम गुंडा को अच्छी गुंडी हो। Stick to that. Didi, not me, okay? You're great. You are a You're great best. गुंडा गर्दी तुम मस्त करती हो। वही करो यार। You gotta play to your Yeah. strengths, bitch. आप टॉप बिच बनने पे फोकस करो, Correct. मायावती की गांड मारो। I'm not a part of this. Didi's- हम ही तुम आके कंप्लीट द सेंटेंस। चाटा चाटी। हम ही तुम आके ममता। दीदी I mean, you know, she probably has some boy toys around, dude. तो दीदी भाभीियों की बात करते हुए हाँ। भावा घोष पे आते हैं। Bro, तू मत करिए। मत करो, देखो इसको कोई मल्लू तो नहीं मिली, इसकी पर्सनल लाइफ उछाले ना उछाले। लेकिन he's got a पंजाबन lady friend. No, Buddy. listen, don't go there, dude. That's I'm from there. It's personal, dude. Don't. I'm How dare you, dude? That's shit. fucking disgusting, bro. Shit, man. You're putting our friend on the spot, bro. I mean, I guess now that he's monogamous, we can't talk about it. Huh? Yeah. Yeah, When so- he was slinging dick, when he was pumping and dumping 3 ladies in the one night, then it's up for, you know. No. He looks so pleased. Yeah, the expression. Yeah. I'm happy. The picture of satisfaction. Well, then we won't stop talking about it. we like when our friends are happy. We got to focus on their happiness. Yeah. And what precisely Really is giving- zoom in on what it. is the source of the happiness? Food. Food linked businesses And people. and people linked to the food. I like it. Correct. Yeah. Hey, you're not the only one. Okay. 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 I don't नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मैं bro. तेरे को अनकंफर्टेबल देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। अबे हमने कितने दोस्तों की हमने you know तो कायम है वो दोस्तियाँ आज भी। रिलेशनशिप दोस्तियाँ कायम है, दोस्तियाँ कायम है आज उनके भी। रिश्ते कायम। देख मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में ऐसी बातें कर करके देख हमने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ सीखा हो 1 साल में। मैं बताता हूँ ना। 1 साल हो गया हमको बाय द वे। एनिवर्सरी का नोटिफिकेशन आई थी, you created your account 1 year ago, something like that. I think we posted our first episode on January 13th. Today is the 15th. Congratulations. Great handshake. he wagged my finger for a bit. अब तू जितना देता है मैं उतना लेता है। ये तू सड़क पे बोलता है क्या और नहीं तो क्या? Among other places. रात को? छतरपुर में करता क्या है रात को? तेरे को लगता है? Bro, दुनिया बदलता हूँ मैं। In any case, I'm But just saying if there's any lesson for us to have taken away from the past year of podcasting, let's not discuss our friends' present relationships on the podcast. Previous ones, Okay. So we shouldn't discuss our friends' current relationship. friends, not hosts. Okay. Host के तो गांड मार दो। Right, correct. क्योंकि मेरा तो काफी सिक्का उछला है। हाँ, और host मैंने उसके साथ डील भी किया है और वो चीजें भी अभी कायम है। hosting अलग है। तेरा दुकान है भाई ये। अब तू क्या खुला आगे नहीं खुली करेगा? मैं नहीं खोलूंगा तो कौन खोलेगा? Exactly. दुकान खोल के बैठा है तू। ठीक है, so we should not talk about our friends' current relationships. Fine, I'll respect that.
Does your current relationship know that your dream is a Mallu though? There you go. Right. Mallu? हाँ. Okay. तो कैसी चल रही है खाना तेरा life? खान पान की बदलती सही है तस्वीर. भाई. I was in Bombay in the beginning of this year. Should I start taking Ozempic? Yeah, for sure. है ना? Okay. I don't think you can get it in India though, right? You don't I have mean, Karan Johar is using it. but he can fly that shit in or something, dude. So you do the same. Well, I can't afford that much. I can afford a little bit. I can afford it at retail, I guess. But I think there are alternatives here. उसके dealer से बात कर. For sure, there must be. How to lose weight in India without trying hard. That's the idea, right? Ozempic India. What is Ozempic? Is it available in India? Oh, Is there in India? yeah, you can get it here, dude. There you go. तो करण जोहर भी retail पे ही ले रहा है. अच्छा तो Ozempic करता क्या है? कैसे आपका वजन Oh, this is a घटाता है? What is the thing semaglutide behind it? injection. It basically reduces your appetite. It's completely. semaglutide. So what it does is it increases insulin production. Hmm. It also lowers the capacity for your bowels to empty out, so you feel fuller longer. You will just not be able to eat as much as you used to, Okay. and it also reduces your appetite in general, and it lowers your blood sugar. So hence you end up losing weight. This doesn't sound great for you. It's great. Actually, is great. Should you be But can you suppressing go the- off it once Yeah. you start? Yeah. Okay. Should- Well, it's the kind of thing that you have to like wean off as opposed yeah. to just cold turkey. And I think the problem is if you start doing it without any strength training to pair it with. अगर तुम strength training कर रहे हो, Then you lose muscle weight. otherwise you end up losing muscle weight, and otherwise it just becomes untenable. Like, it's one of those things where you'll just regain the weight. You will also not have the metabolism for when you do go off it. If you are doing strength training, then you will retain the metabolism, that kind of thing. अच्छा, I'm gonna start, dude. mostly because of lack of knowledge for sure, but I just take a dim view of appetite suppressants in general. Is that something you should be? It's not an appetite suppressant, yeah. It's like the byproduct is appetite suppressant. It's a GLP-1 antagonist. ठीक है, उसका बाय प्रोडक्ट वो होता है. उसका गोल ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कम रखना, इंसुलिन बढ़ाना. और इंसुलिन बढ़ाने से बेसिकली तुम्हारा आधे सारा वेट लॉस उसी में आता है. और बाकी द गैस, the bowel restriction, whatever emptying restriction, that I think it's just like you can certainly eat as much as you You'll want. be full of shit for longer. No. I don't know. I don't know that much. I think that's exactly what that means. नहीं. Restricts your bowels. आपके 2 बार गांडे खुल गई. Bowel then में तो आप तीसरे बार हग नहीं सकते. maybe stomach emptying. It's not bowel, maybe. I don't know. Well, You I can guess. only open your asshole once a day and like let Listen, out whatever. I guess my happens. doctor will have to. Yes. Ozempic is like a butt plug. I got to go to an endocrinologist. Endocrinologist बोलते हैं ना? Yeah. The people who do the diabetes shit, right? It's the endocrine. Yes. It's the endocrine endocrinology. system, Correct. right? Correct. Okay. This guy knows nothing. I don't. बंगालियों को नहीं होता डायबिटीज? इनको चीनी खाना आता है बस. नहीं, तेरे डैड को तो होएगा पक्का. नहीं है diabetes. नहीं है? He just has a fatty liver. Well, that's Good like stuff, one step away, dude. Like, yeah, one step away. But Yeah. that's probably because of alcohol, That's not because of alcohol. right. It's not from eating. He went up to stage 2, Huh? stopped drinking, Yeah. stopped red meat, got back to stage 1, Yeah. started again. drinking Yep. just as before. He's like, अब तो ठीक हो गया. No, I'm not going to name who, but someone close to my family just had a heart attack about 10 days ago, 10-15 days ago. Fuck. ठीक है? अभी this 3 days ago लोडी पे मेरे डैड बात कर रहे थे फोन पे, कहते he's drunk again, this guy. 4 दिन हुए घर वापस. Hey man, लोडी है देख. लोडी के लिए तो करना पड़ता है. Dude, he's not Punjabi at all, bruv. भाई वो स्पिरिट में वो Bro, I मान mean, come on, dude. Like, what the fuck? Nothing stops these older men. Yeah. Once you hit the 60s, you're like, fuck it, bro. जिंदगी जी तो ली कर तो दे मैंने. अब ले ले. अब भगवान को दे दे. कोई फर्क नहीं पड़ता. अब मेरे को जीने दे. इनका थोड़ा invincibility complex तो है. I think you're tapped out, bro. Of That giving is true. a fucks to give. You're tapped out at the age of 60. And our parents were not as privileged as us growing up. Yeah, and so stuff, they went through the main struggle. They've gone through the main struggle. They've really made it. They have idiots like us as children. They made it. They're like, fuck up. Yeah, like you And can then they made afford these. Yeah, you can like- afford to have idiots like us only when you've made it. Exactly. And Otherwise, it's then not possible. they're supposed to give more of a fuck about themselves. Get out of here, bro.
पूरी जिंदगी कट गई. I get it. I mean, I understand. But as someone who's trying to care for their health, get Ozempic and shit, I then wonder why would you do that to yourself? Mm. Let me look into it. Let me get some GLP-1 agonists. You gotta get a size 0 somehow, dude. Shout out Kareena Kapoor. Yeah. What is Kareena Kapoor a size 0? Yeah, No, was back in the day, and it was like the popularization of size 0 क्या होता है इंडिया में इंट्रोडक्शन ही ये था कि करीना ने size 0 फिगर कर रखा है तो फिर That was Yeah, for whole Size market. 0 is what? 0% body fat. No. That's not possible. No, it's so women's dressing Uh-huh. has sizes. so 0, size 0 1, in the 2 dre- in the dress size. Yeah. Okay. Yeah, as skinny as you Got can it. get. But even then, I don't think she was actually a size 0. She was like, I think, a size 2. That was just a marketing thing. Sure. Yeah. but that was the thing. और टशन पिक्चर आई थी ना टशन Yeah. बेकार पिक्चर थी वो. नहीं पता. हाँ देखने लायक भी नहीं थी. उसका सैफ का चक्कर शुरू हुआ था उसमें. मैंने देखी भी नहीं थी वो वो पिक्चर. सब कुछ तू कितने बार देखा था? I've never seen the movie. I've never seen the I movie. was stopped tapped into the gossip at the time. Of course you were tapped into the gossip. We talked about Zoom TV like it was the fucking hell. Yeah, listen. Be all and end all of fucking. Fuck The E24. next episode, you will Zoom receive was a the bonus real episode shit. next week, guys, because we did one yesterday, but it was too scatterbrained for us to give a fuck. I mean, like to really think it was worth the regular upload slot. Not that we're particularly give a are very particular about the level of quality of content. Good tangent. Keep going. Ha, but the episode you will get next, उसमें भी ये Zoom TV की चार्टर है. क्योंकि इसको बॉलीवुड गॉसिप बचपन से इसको प्यार है इसको बॉलीवुड गॉसिप. Good tangent. Yes. Yesterday was fucker sakanti, right? Yesterday there was a whole lot going on, dude. There was Dangal, and Da- there was Pihu, Okay. and there was fucker. Fucker sakanti. Fucker Sakranti. Fucker sakanti. Fuck and suck Fucker auntie. Sakranti. Fuck and suck auntie. Suck and fuck aunties, dude. Motherfuck auntie. I'm sucking and fucking aunties. Maybe motherfuck auntie. Yeah. Yeah. I bet that's a category. I want to motherfuck the auntie. मतलब कि auntie के माँ चुननी है? I don't get it. नहीं आपकी माँ आंटी को चौधरी है. Motherfuck auntie. हाँ. Oh. हाँ. Well, Okay. well, I'm sure there's an audience for that. As I said, category तो होगी. कुछ तो कहीं ना कहीं होगा. Yeah. सही बात है. Hmm. So you can get it. क्या होता था my naughty neighbor or something like that. There was not like a Brazzers thing, my naughty neighbor or something. एक होता ना कुछ बड़े सारे होते हैं उनके what are There the was the Bang Bus, which I remember. that's Bang Bros though. That's not Brazzers. Okay. Bang Bros का Bang Bus Bang है. Bus होता है. Yeah, Brazzers के तो अलग होते हैं ना. My naughty ex girlfriend और my stepsister होता है क्या उनका पता नहीं क्या. Naughty bookworms. I remember naughty bookworms. Naughty Dude, I remember bookworms. naughty bookworms. There used to be this I thing do. called a family swap Family in swap. Brazzers. Okay, interesting. Yeah. Basically, sure. family members get swapped, and then everyone's just fucking everyone. Why Brazzers is As still soon as you get blood relations out the way, you can just have sex if you're in a room. That's really the thing. That's यार that's how shit, मैं life मम्मी को works. नहीं चोद सकता. स्विच करो आंटी के साथ. अच्छा अब पापा नहीं यार ऐसे अरे बेटी को चोदते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा. दूसरे की बेटी नेबर की बेटी है ठीक है मैंने. it's good. You gotta have the like it's the first cousin rule. Yeah. First cousin first base, second cousin second base, third cousin third base, fourth cousin fourth base. That's how it goes. यही तो है सपिंडा रिलेशनशिप का हिंदू लॉ में. Yeah. यही तो 3 generations तक नहीं कर सकते मदर के साइड पे, 5 generations तक नहीं कर सकते फादर के साइड पे. ये हिंदू लॉ उसमें है मतलब Generations. 5 generations or degrees of separation. Generation तो हाँ means- डिग्रीज ऑफ सेपरेशन. जनरेशन तो आप अपने पढ़ Like पढ़ code दादू के- मतलब कि अगर- पढ़ पढ़ अगर- दादू को चोद थोड़ी सकते हो. अगर आपके और आपकी बीवी के बीच में 75 साल का फर्क ना हो 5 generations, then you can fuck. हाँ मतलब तुम समझ गए ना डिग्रीज ऑफ सेपरेशन. 5th cousin तक अच्छा 5th cousin से सेक्स नहीं कर सकते? मैं शादी नहीं कर मैं तो सकते. अच्छा शादी नहीं कर सेक्स तो कभी भी सकते. कर सकते हो. अबे बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में जो होता है Oh. इट्स बेस्ड ऑन द हिंदू लॉ ओनली एंड उसमें सपिंडा रिलेशनशिप डिफाइन होता है. सपिंड मींस सेम बॉडी. Oh. सपिंड तो up to 3 degrees of separation on your mother's side you cannot marry or whatever. On your mother's side. 3 degrees on your mother's side, 5 degrees on your father's side.
But this is incorrect. I personally have Yes, people who have married first, second cousins, bro. yes, ये मैंने I भी know. देखे हैं ऐसे. हाँ तो what the ऐसे fuck? हमारे मेरे थर्ड कजिन्स में ये चल रहा है. हाँ तो ये क्या सीन है भाई? ये तो हो चुका है, होता है. होता है, और साउथ इंडियंस में तो होता ही है मामा और ये. Yes, yes, वो yes. मामा there और are- भांजी में हाँ, मामा भांजी होता मामा है ना? भांजी में वो होता है ना. तो ये होता है मेरे को नहीं बेसिकली. पता क्या होता हाँ है. तो बहुत अगर बड़ा होता है ये. एक भाई बहन है, बहन की अगर बेटी हो तो मामा has dibs on that pussy. First right. Like dibs, like that's my bitch. Oh, I am out of Mallu scenes. Dude. कहते हैं मेरी बेटे की मेरी I'm बहन out of की Maldives, मेरी bro. बीवी की भाई से शादी हो जाएगी. मेरी बेटी क्या like मेरी बीवी के भाई. मेरी हाँ मेरी बेटी की मेरी बीवी के भाई से. हाँ right? हाँ. Like, तो सही तो मेरे बोला साले से. साले से. Yes. हाँ. तभी तो साला बोलते हैं साले को. कि साला तू तो पैदा होते मेरी बेटी में नजर डाल रहा है. Bro, can you? Yeah, that's what we discussed. Like it's a trip. I would imagine it to be such a trip to be like एक बच्ची पैदा हुई है. I know Yeah, what you're dude. gonna say. बच्ची पैदा हुई है मामा साइड में. Well, ऐसा like, लगा. I got dibs on that pussy. TikTok, bitch. 18 years. ये चूत मेरी है. ये चीज मेरी है. Can you imagine, dude? That is insane, bro. What a dynamic. And wasn't it so? This was a case that either you brought up or Anshuman brought up where. I know somebody Yeah, he knows. who this is crazy. I know somebody who ऐसे ही हुआ था कि मामा ने भांजी से शादी कर ली. वो शादी आफ्टर फ्यू इयर्स मतलब फैमिली ने कहा ये क्या है. एनीवे वो शादी टूट गई. She remarried somebody else, the भांजी, and then she had an affair with the mama again. her ex-husband, the mama. Yes, her mama. चक्कर चलाया मामा के साथ उसके बाद. वो blood relation होता है. You're in sync. Yes. No? Blood is thicker than water. And probably cum. You've known your husband for 18 years beforehand. You've called him Mamaji, Mamaji, Mamaji. And then you're like, Daddy. Meanwhile, your father's tearing his hair out. Yeah, banjo. That's fucking crazy, dude. Is it Kerala or is it Karnataka? Tamil Tamil Nadu. Okay. Proper Madrasis. Proper. As Full as it gets, power. Full power. Tamil Nadu is the genesis of South Indiality, Yes. right? Is it? I don't know. Well, so the concept of Tamil Nadu ekdam means, I think Nadu, that means Nadu. nation. So Tamil Nadu has always Tamil defined ka itself nation. as a separate nation or a separate civilization, that kind of thing. Whereas Kerala mein itna nahi hai wo scene. I think they're, but Yeah. They know they're mixed. But Yeah. Andhra was probably there because that whole area there was a Nawabi land. No, it was a separate thing altogether. हो भी सकता है. Hyderabad Nawabs. Hyderabad, but वो तो Telugu language होगी ना. The language is totally It different. was but it was Andhra, no, at one point. Yes. The Abhi- Chola Kingdom. Batura Kingdom. Choli? चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे. ओ छोले के पीछे भटूरा, छोले के नीचे भटूरा, ऐसे खाऊंगी मैं. अब मेरे को फिर से भाभी जी की याद आ रही है खाने से. चुप 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 चुप. Good one. चोले में कुलचे. But देना wait, I है. was gonna say something before you started the Ozempic thing. So go for it, buddy. I was in Bombay for 10 days. Oh, who asked? Literally no one. Carry on. This time I haven't derailed any of your stories yet. You were in Mumbai. Effect के लिए सुट्टा तो पूछे. मैं नहीं बोल रहा. It's fine. पिछली बार तूने कोई बात छेड़ी थी कि ऋत्विक घाटा Machada. Fuck you, bro. at FIT FTI. FTI FIT तो Fashion Institute of Technology है, sorry my bad. At FTII They are FIT at FIT, aren't they? it's an okay school, but it, मैं बंदियों की What fit- is FIT? fit It's होने की बात कर रहा हूँ. NIFT. FIT is discount persons and in New York only. Ah, okay. Yeah, It's FIT. like NYU and NYFA. Sure, Tish and NYFA. Tish and NYFA, Yeah, basically, correct. yeah. But no, not even. I would not even afford. Like FIT is actually a good school. Actually a real school. NYFA तो is the Barry Johns of America. हाँ. Yes. वो असली वो तो दुकान ही नहीं है. वो तो डिप्लोमा की दुकान है. डिप्लोमे की दुकान है वो. Hmm. It's not an actual institution. Education से हटो. हम कहाँ जा रहे थे इससे पहले? Right.
FIT bitches, beautiful bitches out there. Yes, They're fit. They're Yeah. literally fit. Right. In the English way, they say you're fit. Yes. They mean hot. Yes. They say fit though. Yes. England is weird like that. They have weird slang. You're fit XX. That's anyway. What I was getting at Right. was FTII में कोई विधु मनोज चोपड़ा वगैरह और ऋत्विक घटक something like that. You had started the conversation last time, and we concluded with the fact that It was Hrithik Roshan the whole time. कि ऋत्विक घटक की पिक्चर ठीक है पर रिबू का काम देखो. हमने ये बात करी थी. मेरा काम देखो, सुकृत जब प्रोड्यूस करेगा, पैसे डालेगा बहुत सारे. प्रोड्यूस कर लूंगा, पैसे नहीं डालूंगा. पैसे डालने के लिए छत्तीसगढ़ है. Yes. छत्तीसगढ़ से पैसे सरकार लगेंगे. अपनी जेब में चलती है. पता नहीं यार, होपफुली पिक्चर बनाए हम. कोशिश तो कर रहे हैं बनाने की. तब तक एक छोटा सा म्यूजिक वीडियो भी बना रहे हो. एक म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं और एक एड फिल्म बनाएंगे. हाँ. Till then, that's the plan. Yeah. And hopefully the fucking sketches, bro. We gotta do that. हाँ भाई, म्यूजिक वीडियो के बाद तुरंत यही Correct. Mhm. That's the idea. बीच में कुछ मत घुसाना. Excuse me. Excused. बीच में ऐड आएगी भाई. Hello. After the music video, it's probably gonna be ad first. Oh my god, I gotta stop. उसको थोड़ा this. पुश Prove करके it. फटफट खत्म कर देना है. आज मैंने गाजर मटर और मशरूम खाए हैं. अच्छा. ये देख, झाड़ पत्ते खाएगा ही होगा. I've already had a middle of the day shit. I typically don't do that. It's for me, it's in the morning. But I guess there was so much fiber in all of that food that I ate. I was like, what the fuck? मजे आ गए. But midday poops are great. They make you feel Alive. alive, lighter. Make you feel like people say that about skydiving, going on a dirt bike, quad bike पे जाके sandwich में कर रहे हैं, make you feel alive. Middle of the day shit. अबे तूने कभी मोटा हागा छोड़ा नहीं है क्या? हैं? Bro, तेरे को ऐसे एहसास से कोई ऐसे तो मेरे को बोल सकता है. ऐसे जहाँ ऐसे- मोटे ऐसे- आदमी को ऐसे इंसल्ट मत कर. ऐसे जब वो गिरे एंड थोड़ा सा स्प्लैश लगे पिछवाड़े पे कि इतना भारी निकला है. अरे वो यहाँ से गिरता आपकी रूह ऊपर आ जाती है. है ना, बिल्कुल ब्रो, फीलिंग ही अलग होता है वो लाइटनेस का. क्या देख बात कर मैंने रहा है? एक बार ऐसा बड़ा सा हग्गा मारा था that where the fumes were so noxious हाँ. I almost passed out by myself. I'm like, what the fuck is this? I'm like, God, oh my god. ये तो मैं बिलीव कर As a सकता fat हूँ. person, you can't fucking disrespect me and say कि तूने कभी मोटा हग्गा नहीं छोड़ा. How the fuck? Where do you hit the balls, तो dude? पर्सनली ले गया. Dude, I'm just saying, bro. What a shit show. There's only there's certain things that are dear to me. Well, Including a morning poop. so Hey, we're talking about so how do your hormones feel after it leaves your body? After a part of you is flushed down the toilet, I don't never get, to come back. I don't get the joke. Hormones? Never mind, man. I was making fetus Oh, implications. acha. Okay, I'm shitting out a baby. Is that how miscarriages happen? You shit it out galti se. Correct. It goes out the wrong hole. How else could it happen? These ladies don't. Literally a miscarriage. It went in the wrong carriage. These ladies with the anal sex, you gotta stop it, ladies. You're confusing your body. They're like कि बच्चा कहाँ से आगे पुसवा से निकलेगा कि बुंडवा और बुंडवा से निकल जाता है. This happens mostly in Bihar. Listen, yeah, because बुंडवा. अरे फिर से पुसवा से निकला है. बुंडवा से. अरे इतने नहीं पाल सकते यार. एक बार एक बुंडवा से निकाल दो यार. ऐसे. नहीं रखना. तभी काले काले निकलते हैं बिहारी हैं बुंडे से निकल. Fuck. Good thing we don't have any Bihari fans with kids or anything. No. Or the very dear friend who's also a street artist, or his sister who's a client of mine. Correct. Listen, it's not like I'm surrounded by Biharis. I'm not. It's not like Nikhil's Bihari. He's Nikhil not. is Bihari. He is. That's the good buddy. देखो यार. एक बिहारी हागा भारी. काम भारी. Wow. चार दीवारी. Sheh. Shit.
What else is happening? यार मैं What कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ that Bombay is a shit hole, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हमने हो. बात करी थी. ये बात तो तू कभी भी कर literally सकता है. allowed you to कोई- speak. You just wanted to throw a tantrum like a little woman. मैम प्लीज मैं बोल सकता हूँ. मैम मेरी बात. बाद में बोलियो. मैम मैं नहीं बोलूंगी अब. मैं नहीं बोलती. मेरे को नहीं बोलने दिया. मैम एक्चुअली मैं चाहता हूँ सब मेरी बात सुने जब मैं बोल रहा हूँ. मैम मैं उससे पहले नहीं बोलूंगा. मैम सबको चुप करा दो ना प्लीज. मैम तभी बोलूंगा मैं. थैंक यू मैम. Bombay sucks. Let's go. Bombay sucks. Bombay sucks. Bombay sucks. Bombay sucks. माँ चौदा करो. शाहरुख खान की माँ की चूत. I love Shahrukh Khan. Well, But sure. Karan Johar made Shahrukh Khan. Though he didn't. He literally did. No. नो मैन. No? शाहरुख His खान was father on. did. Shahrukh Khan made Karan Johar. Karan Johar was a fucking AD when Shahrukh Khan was doing DDLJ and all that shit. Yeah. अच्छा Karan Johar ने नहीं बनाई DDLJ. नहीं. I don't know that. आदित्य उसके- चोपड़ा ने बनाई ना. किसने बनाई? उसके बाप ने नहीं बनाई थी? यश चोपड़ा ने बनाई. Sorry. हाँ. Ah, correct. Bro, and Shahrukh was already, by the time he worked with Karan Johar as a director, he's already in the industry some 12, 13 years or some shit. Right. He's done a lot of his Bazigar, Bacha, all this crap has been done. Shahrukh Khan made Karan Johar, bro. What the fuck are you saying? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ. Oh. तू ही उल्टा बोल रहा है. It was a spoonerism. Instead of the syllables, I swapped the whole word. होता है. Of course. But now this dharma is part of Anyway, you were saying Poonawala's Mumbai is a shithole. thing. Oh yeah, Adar Poonawala has हाँ. invested, I think 50% stake. yeah. आधा पुना वाला. Adha आधा. Poonawala. आधा आधा पुना वाला वाला. आधा बॉम्बे वाला भी. आधा पूरा वाला. But he's domiciled in London these days. No? I'm not sure. Yes, yeah, he moved there during the pandemic only. He was there. हाँ. तभी तो उसको परेशान कर रहे थे बेचारे को कि यार कि मैं तो सेरेमनी बनाना दवाई बनाना. बनाना दवाई. बनाना. जल्दी बनाना देना दवाई देना ये दवाई लोग देना मर रहे हैं भाई इनकी चुप. दवाई के लिए दे रहा तू मेरे को भाई चुप बनाना जल्दी. जल्दी बना what the fuck dude these people are nuts you know and then they talk about oh why is there so much intellectual capital flight out of the country and shit like that because the people who are actually putting out good shit you bully them into Doing Fucking- bullshit. fucking leaving and shit dude Yeah. they want to leave I think everyone fucking anyone with just like 3 cents to rub together is moving to Dubai. But that's also because of the taxation now. People Taxation. want to get. The others are Get going away on from- holiday. Fuck that. I hate it. I hate that place. Any case. But मैं कह रहा हूँ कि like seriously वो वहाँ पे हाँ तू सही कह रहा है कि वहाँ पे इनकम टैक्स है नहीं. इनकम टैक्स नहीं है और साथ में वहाँ पे ना फिर 2 नंबर के काम बड़े आराम से जाते हैं. Hmm. There's so much of Bitcoin crypto trading that happens there. And a friend of a friend, I'll bleep the name out. The friend's older brother. का हाँ भाई हाँ. उसको बंदे को धंधा नॉर्मल करना आता नहीं वो यही करता है कि मैंने गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ करती है मैंने घड़ी यहाँ से लेके यहाँ करती है उसका काम ही 2 नंबर का ही काम है उसका तो वो वहाँ बैठा हुआ है he's moved there Must But be the doing younger well. brother is here, or he's also there. is here हाँ हाँ, वो यहीं पे है he moved back after college the older brother fucked off Hmm. तो ये एक भाई वापस आया दुबई से दूसरा एक दूसरा दूसरा भाई चला वो गया. एक बंदा दुबई में होना चाहिए 2 नंबर के काम कहीं ना कहीं से तो होंगे ब्रो पैसा यहाँ से मकान यहाँ करती यहाँ से रोलेक्स यहाँ करती ये होता है उनका धंधा ये धंधा सही चल रहा होगा. It is. That's what I'm saying. So that's the kind of place where you can do these kind of, have that kind of business. Now, an associate of my father's, not a friend or whatever the fuck, but brokerage guy. अब वो जाके क्रिप्टो की ब्रोकरेज कर रहा है कहते हैं यहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है ना मेरे को कुछ टैक्स देना ना मेरे को टीडीएस ना लोड़ा लसन वो मस्त कमा रहा है वो बंदा वहाँ पे या so that is why Dubai is a hot spot for this shit. Even isn't Manita Dutt also now based out of Dubai? Yeah. Right. Oh, for a long time, for a fair bit, like two Since years. COVID, she's been there. Since the pandemic, yeah. That's what I'm saying. During the pandemic, a lot of people moved out there, dude. But Sanjay Dutt must be here. संजय Sanjay इधर Dutt ही तो है, of वो course आधे ही- टाइम उधर जाता है. And they वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है यार हमारे कंटेंट की. Because they don't really necessarily संजय दत्त के घर में. क्या? दुबई में. Good joke. Good. अबे आगे बढ़. तू चुप रह तेरे पे आ जाऊंगा फिर से. बैठा रही हूँ अपने बॉल ब्रथ में. बता.
अच्छा एक बात बताया अगर मेरे को 4-5 प्लेट बटर चिकन 2-3 तंदूरी नान को रेट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे को सैटरडे को पार्टी करनी है एक अपने birthday इवेंट की। करना है एक इवेंट करनी है तो मेरे को कोई चाउमीन मतलब if you वगैरह have any personal connections कोई at कोई all जानने वाला हो कोई जो केटरिंग करता हो जानने वाला हो तो मानने वाला हो पहचानने वाला हो कोई मालवा पराठे वगैरह खिला दे कुछ दाल कचौड़ी हाँ सिया पार्क में है caterers बहुत सारे अच्छा नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को पंजाबी चाहिए कुछ था मेरे जी के एरिया में है को। कुछ मेरे को कोई पंजाबी लोग हैं जो ये करते ऐसे हाँ जरूर जरूर ओके जैसे तूने मैं पिछले menu 3-4 दिनों में भेजता खाया होगा मेन्यू भेजता हूँ हाँ। भेजियो भेजियो This is just too meta. This is too not even meta. This is just too inside joke for for people anyone to people to understand understand, dude. अरे इसकी दिया यार यार Shut up! I'll cut this segment out. सेगमेंट नहीं इतना इतना म्यूट कर दे Smection वाओ section segment. सेक्शन Next topic. Next what's happening? हाँ सेक्स अब शन करते हैं Next चलो घूमते इंटरनेट पे देखते हैं कि क्या सीन है. Oh, जब तक ये ढूंढ रहे तो बॉम्बे बता So, like- शिट होल I remember living in Bombay for 3 years and I used to love it. Bombay उस time पे, sucks. ठीक है बॉम्बे सक्स इस बार मैं रियलाइज किया कि मैं हर बार वापस जाता हूँ दिस सिटी somehow gets worse. Yeah. It's retarded. मैं जिस मेरे दोस्त के घर पे रह रहा हूँ वो कुछ 40-50 हजार रेंट दे रहा है to live in a 1 BHK in Vrushab, he's Versova. been on the podcast. वो बेचारा इतना रेंट दे रहा है वो सुबह सुबह मैं उसके घर पहुंचा हूँ बोलता है कि भाई मैंने आज चूहा पकड़ लिया एंड मेरा दिमाग सटक गया भाई ये सुन के लाइक यार ऐसे थोड़ी ना रहते हैं दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ Wait, लिविंग वेयर यू आर अर्निंग डिसेंट मनी एंड तुम्हारे दिन गुजर रहे हैं चूहे पकड़ पकड़ के या जस्ट द फैक्ट कि द बिल्डिंग कैन फॉल डाउन ऑन योर हेड एट एनी फकिंग पॉइंट इसने चूहा पकड़ने में करियर देखा है इसको शायद ये इसके काम आ जाए At least he'll pay for the rent, you know, and then he can. ही वाज लुकिंग फॉर अ साइड हसल Yeah. भाई पकड़ तो पा रहे हैं पकड़ तो लेता है he's pretty वो he knows where to put the traps फंसाने में अच्छे हैं भाई फंसाने में तो अच्छा है गुड 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 बट या इट्स अ fuck all city मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ यार दिल्ली वापस घुस के देख दिल्ली की तो बात ही अलग है दिल्ली में अलग मजा है चूहों की गार्ड पड़ती है घर में Bro, घुसने I was in South Bombay in Colaba, one of the fancy fucking places in front of Bombay Gymkhana. ठीक है मैं चल रहा हूँ कहीं एक बैरिकेड लगा हुआ है उधर सामने अराउंड 15 चूहे मैसिव फकिंग रैट्स हाँ और उन्हीं के बीच में अराउंड 5-6 बिल्लियां सब एक साथ चिल कर रहे हैं बैठ के ठीक है आई सॉ दिस विजुअल आई लॉस्ट माय माइंड ये तो फूड चेन भी रिस्पेक्ट नहीं करते बम्बे वाले चलता ही नहीं है नथिंग फूड चेन की भी इज्जत नहीं है इस एनिमल्स डोंट टट्टी से फंक्शन शहर द वे में। दे आर सपोज्ड टू फंक्शन इन दैट सिटी Stupid. It is, you know, it is Stockholm syndrome. I think people love that place for the culture, what it has to offer. Yeah, And I mean, see, the people are great. Yeah, yeah. The warmth you feel there is something. देख Yeah. इंसान भी वैसे टट्टी होने चाहिए अब बॉम्बे में ये भी खराब दिल्ली में भी वार्मथ होती है लेकिन दिल्ली में वार्मथ होती है there's a facade of की एक मतलब ही है। अकड़ के हाँ। पीछे होता है अपन है ना हाँ yes yeah which is good listen I like it Self respect तो है भाई Mumbai is too soft for me people are just too nice I can't stand it you know there's no way to be listen I can't really be myself which is a dick I got to be an asshole you know Yeah, yeah there are two people pleasing out there huh? they are. they're too considerate they care for humanity or whatever etc gay please yuck yuck Too gay of a city. soft Halwa. Ew. Halwa is not this guy, dude. अबे I'm telling you, man. जिंदगी में मैंने नहीं सुना ये और तो नया सीख ना कुछ. नहीं इस गाने में सुना दिया उसने औरत ने yes Who wrote the lyrics for that song? Let's go there. What is the song laid out for the audience? अरे चिकनी चमेली में okay dispute ये है कि ये कहता है हलवा is gay हाँ. हलवा हलवा मीठा होता है means gay gay. Mitha is one thing. मीठा is मीठा होता है gay And halwa. हलवा नहीं यार अरे चिकनी चमेली में सिरी सिरी कटरीना कैफ जी बोलती हैं हाँ सुनाइए अरे जान लेवा जलवा है सुनो देखने में हलवा देख ले, है। हलवा। अरे वो ऋतिक रोशन को कह रही है जान लेवा हाँ, जलवा है so देखने he's में हलवा है वो She's ऋतिक saying रोशन को गे he's थोड़ी so बोल रही pretty है that he looks like a gay boy. he looks like but a he's faggot not. You
No, are you fucking kidding me? You think Katrina Kaif is calling Hrithik Roshan a faggot, dude? I don't think that this is correct. insane. This is insane. Because at that point, Hrithik Roshan is sitting next to Sanjay Sanjay Dutt Dutt. in his fucking bald Yes, head, Kancha bald- Cheena, wo Kancha Cheena character. hairless cat edition. Yes. So Hrithik Roshan looks like a twink next to him, no? At that point, he really doesn't. that is what she's trying to say. She is not trying to say that at She's there impressing Sanjay Dutt, not Hrithik Roshan, brother. She's dancing for him. all. अरे तू ध्यान से देखा नहीं वो गाना. तू बहुत ज्यादा ध्यान से देख लिया है. मैं बेटे कटरीना की तू बात नाइ- अच्छा तू 9XM पे हिलाता था एज अ चाइल्ड. नहीं 9XM पे Zoom पे मूवीज कितनी Zoom. लेट आती थी. ये Zoom का बंदा है, bro. तो Zoom पे हिलाता था. नहीं Of यार. course. When the हिलाता item था. songs played. नहीं. अरे फैमिली के साथ बैठ के मैं मम्मी दादी बॉलीवुड गॉसिप टाइप वो देख लेते. मैं दादी को कहता था लगाओ. और कभी कभी ऐसा भी होता था जो शाम के 7:30 बजे आ रहा होता था ना, हाँ. उसका रिपीट 9:30 बजे आ रहा है, तो भाई दोनों बार देख रहा है कि पता है यार मैंने कुछ कुछ miss- Oh, ये अग्निपथ का गाना है, bro. ये this is Yes, that वही तो कह संजय रहा दत्त हूँ. वाली अग्निपथ. मैंने ये पूरी I could not finish this movie, dude. It's bad. It was too much for me, dude. हाँ, You liked it. I know you I told liked you it. told me to watch it. I liked it. That's the reason I started watching it. मेले तो इंटेंस For him, it was like this is peak cinema, brother. ऐसा नहीं है, but I loved the intensity of that movie. मेले सही था. It's so melodramatic. It's insane. 93% Rotten Tomatoes. This movie, dude. देख रहा है No, but that's बेटे. But the original Agnipath this is 14 critic reviews. The 1,000 plus audience ratings rated at 62, which is the right rating. Yeah. अरे तो ऐसे भी कब तुम्हारी भी ऐसी फिल्म्स होंगी नहीं which होंगी. may not नहीं होंगी. correct. तुम जाते ही क्या हो सिनेमा के बारे में. Correct. Fair enough. I can't bring up cinema around Ripu Ghosh, man. करण मल्होत्रा ये कौन है डायरेक्टर भाई? इसने क्या बनाया और क्या? ऐसे जूस और लैम्प्स और वाटर पिक्चरें बनाता है घर के आर्टिफैक्ट्स के साथ. एक भाई जूस देना लैम्प ऑन करके, नहीं तो वाटर दे देना. हैं? क्या है इसे? Holy water. हाँ होली वाटर जीसस वाला. बस ऐसे करके पिक्चर का नाम रख दिया भाई ने. रेस्टोरेंट में बताओ. पिक्चर बना दी पूरी. मेन्यू कार्ड तो डाला नहीं. This guy who's directed Agnipath is now directing Krish 4. देख. Or is Krish 4 already out? I don't नहीं know. पागल है. I watched the first Krish, then I've Of course, who the fuck? The Krish meaning 3 कोई तो मिल लेने का गया, मतलब then नहीं बनता. Krish, कोई मिल गया क्रिश देन क्रिश 3. नोरा फतेही है इस पिक्चर में, तेरे को पता है? मैं देखूंगा. As does she have an acting role? Oh, even Piggy Chops is in it. हाँ वो तो होगी. वो क्रिश की बीवी है यार. Oh, I didn't know that. तो ध्यान दे यार. मैंने सिर्फ क्रिश देखी. क्रिश में होती है वो प्रियंका चोपड़ा, है ना? हाँ हाँ. क्रिश 3 में क्या होता है भाई? हेलो. मेरे को नहीं No पता. idea. विवेक ओबरॉय विलन बन के I आता don't है. think you need to know the story. विवेक और कंगना विलन होते हैं. मैंने देखा नहीं है. कंगना है इसमें. Ooh. भाई Kangna Ranaut is coming out with a film, no? Or is it already out on? She's Emergency. playing, Emergency. She's playing Indira Gandhi now. Oh. Yes. With a fucking Pahadi accent. She's gonna be Indira Gandhi, one of the most poised women in the And country. most polished, most elegant. They couldn't pick a worse person, like speech-wise, because the way Indira Gandhi spoke is very Yeah. British, just that whatever. Yeah. She's And her French was perfect, whatever. You got to be able to do that to play that role. They don't know how to do It's like हरियाणा से लौंडा This is उठा के probably- जेम्स बॉन्ड बना दो. Bhai, Kangna Ranaut probably produced this herself. Bro, this is the only actress who probably agreed to, portray this particular take on Yeah, Indira no, Gandhi. she's a because BJP person anyway. That's what I'm saying. That's what I'm saying. So and this movie, everyone knows which political angle it's coming from. Yeah. They're not trying to even Do justice to neutrally view yeah, emergency. It's not like emergency They're bad. literally attempting to do Indira Gandhi- injustice to it. Indira The Gandhi whole bad. idea is to fuck it up. And I'm all for it. Light it on fire, dude. I think they will. पता है क्या? आग लग जाएगी. बस चक्कर भी ये है कि ये पिक्चर these fucking stupid ass movies that they keep putting out, they do well for whatever reason. I guess Sabarmati didn't. Sabarmati didn't. It didn't. Okay. It flopped massively. It flopped massively, and it also. I mean, I guess people are just done with it. तो क्या मेरे को तो actually कर्नाटका स्टोरी जो आई थी पहले कि केरला स्टोरी. Kerala Files. or Kerala something. story. Kerala story. Kerala Story. अच्छा. Kerala story that did well at the box office, right? That fucking blew it out of the park. And Is even this Bengali dude only, no? Who did Kerala Story? I think so.
That makes वो sense. apparently बहुत Bengalis पहले are बहुत obsessed. left wing, बहुत politically correct चीजें बनाता था before he became this, and now he only does films like This this. makes sense. Bengalis get obsessed with stuff from Kerala and then they'll change everything about themselves. Ah, nice, good callback. I like it. Yeah. Fuck you guys. तुम्हारे भेजे में घुसता नहीं है फर्स्ट, तुम एक्चुअली स्लो हो तो मेरा वो कमेंट को टाइमिंग चला जाता है। तो मैं ऐसे अब्रेसिवली बोलता उसका भी मल्लू छोड़िया पसंद होगी तो हंसता है, खीखी निकल जाती और नहीं तो तुम्हारी। क्या? Why not? हाँ ठीक है, maybe I need to change. Ada Sharma है ना उसमें, Ada. She's not even Malu lady, dude. But ये अद्दा शर्मा related to आधा पूना वाला, is he the Punjabi? interesting. That Give makes me an sense. अद्दा. That makes sense. But yeah, there's a certain segment of Bollywood that is just like hell bent on doing only the right wing films. Huh? And I guess they've married their career to the winds of politics, governments. of the current paradigm. And once the direction changes, then क्या होएगा? Then Then they'll become liberal. no, then they'll be fucking doing nothing, bro. अभी They'll be- विवेक ओबरॉय मोदी जी का रोल प्ले कर रहे, फिर राहुल गांधी का प्ले करेगा आगे। है ना? राहुल गांधी गांधी का कोई नहीं प्ले करने वाला है। मतलब कहने वाली बात है। वो अभी केजरीवाल। जूडो वूडो कुछ करता है ना, टाइकोंडो करता है। He puts out videos of him taking down people. राहुल गांधी का विवेक रोल ओबरॉय या राहुल गांधी? राहुल गांधी man, not विवेक। देख, राहुल गांधी का रोल एक ही बंदा कर सकता है, बड़े होके दरशील सफारी करेगा। बहुत अच्छा करेगा। He would do justice to that role. He's got the runs in. He's done Tare Zameen Par. It is just now the older credentials version. are sorted. There's a second version of that film coming, no? Sitare Zameen Par or some shit. Apparently it's in the making. are you I'm not joking. I'm not joking. इसमें क्या है, एक लड़की पे कर देंगे? Of course. Are you serious? I Yeah, think so. Oh wow. In fact, even Oh, women, I was just spitballing. it's not just men who are retarded, dude. Yeah. I Equality, think that brother. message needs to go out. It would surprise you. There needs to be more discord. How much retardation is Yeah, there? we There don't needs talk to be about more discourse on women's retardation. It's been enough women's liberation, women's this, that, women's retardation. We need to talk about how women can bat shit, bro. So now there is this. So now on the like right wing podcast sphere, this fact is being bandied about that 60% of liberal voter women have mental illnesses. ठीक है? Now this is based off it's based off a dubious study. ठीक है? But on that self-reported study, 60% of women who said that they would vote blue also did self-report mental illnesses. Now, we've seen the purple hair. We've seen the armpit hair. We know what's happening. Mm. We know it's true. Let's make a movie on it. Sitare Zameen Par. That will be mad if the More like- the main character is a armpit head, purple head bitch. With a septum piercing. Non-binary. Sounds more like snowflakes. And a stick and poke tattoo on her chest. Oh, dude, multiple stick and poke flash tattoos. Like, oh my god. And she'll be You all non-binary. know this person. They are unhinged. And they're non-binary. They're unhinged. Oh my god. Snowflake Zameen Par. It's a Christmas movie. Yeah. That I'll go for. I'll go to the theater for that shit, dude. We need more LGBTQ किया Christmas movies. पिक्चर लेकिन कोई अच्छी नहीं आ रही है थिएटर में। मैं भी देख के तंग आ गया। मेरे पास एक नॉस्फेराटू आई थी, देख ली, फाइन। See, Sitare Zameen Par 2025. Oh, this year it'll be out, huh? And who's in it? Who's acting in it, dude? अभी तक IMDb में बस आमिर खान और जनीलिया डिसूजा लिखा हुआ है. Oh, is जनीलिया पागल बनेगी। She's too old, man. अरे वही प्लॉट she- होगा। वो पहले नहीं थी, अब पागल बन गई। पहले वाले में टिस्का चोपड़ा है ना माँ? Wait. टिस्का चोपड़ा is the mother, right? Sitare Zameen Par cast. I like Tiska Chopra. I like Tiska. इसका उसका। Oh, This- Darshil this Safari guy- is there, Oh, interesting. apparently. आहा। And Tiska Chopra is also directing now, is she not? She's also directed a movie Yeah, recently, yeah, I believe. she did. Which one? Oh yeah, young Tiska Chopra could get it, bruv. तुम बॉलीवुड के दीवाने। तू क्या है साले हैं?
मैं bro Tollywood? cinephile हूँ bro. Cineast बोलते cineast. नहीं, मैं सिनेमा चोदता हूँ. मैं cinephile हूँ. Pedophile भोसड़ी. Okay, Pesophile? I wish I'm a pesophile. dude. एक दिन मैं pesophile बनूंगा. Murder Mubarak इसने डेट करी है? Rubaru and Sali Mohabbat. And there's another one coming called Train from Chapraula. साली मोहब्बत उसने बनाई है और रूबरू. Yes, रूबरू is a short film though. साली मोहब्बत उसने बनाई है. Oh, Train from Chapraula stars Anurag Kashyap, Radhika Apte and Devendra Sharma. Oh, interesting. Who's this? Who are you talking to, dog? Mummy. Auntie. Hello. Wish her happy birthday for uncle. I can't hear you and I'm in a recording. I can't speak. Also, your voice is cutting. Okay, bye. Okay, bye. She says like thank you or something. पढ़ के जवाब दे मैनू. Oh, that's rude. She didn't thank me for wishing uncle. Yeah. I gotta get it from somewhere. बोलो. बोलो बोलो बातें 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 बोलो बोलो बता लो ये बातें. Okay, चुप रहो. बताई मैंने तुम्हें क्या बातें. बातें अपने पास ही रख. बातें क्या भूली जो मैंने बोल के. कौन सा गाना है ये? समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ट्यून है ये. It's not bad. ऐसे तो तेरे को It's better lyrics than Chikni Chameli. बातें क्या भूली मैंने बताई. just because you don't understand the artistry that is Chikni Chameli and the usage of the word hello. खुल के रखेली. Huh? It's Chikni Chameli खुल के रखेली, no? I don't know, man. हाँ. पौवा चढ़ा के आई. हाँ. So Chikni Chameli खुल के रखेली. That's the kind of girl he likes. Just a loose lady who's easy because she's a little tipsy. आई चिकनी चमेली छुप के अकेली. छुप के अकेली. Not खुल के, you fucking pervert. You sick bastard. Yeah. Fucking Bro, I thought it's like कुछ भी बोल देता मान ही लेते. It's like Marathi Hindi, no? खुल के रखेली makes sense. क्या खोल खोल के के जा रहा है? पैर. क्या को टांगे पैर नहीं टांगे टांगे, पैर को. legs. साले बंगाली. तू समझता नहीं है यार आर्टिस्ट्री इस गाने के पीछे. ये मैं समझ रहा साले हूँ. तेरा हवा समझ रहा है. बताता हूँ मैं तेरे को. शुक्र है कोई तेरी कोई बहन नहीं है जिसकी बेटी हो जाए. तेरी तो होगी बेटी. And दूर रहियो सर. बहन होनी चाहिए ना. बहन भी तो होनी चाहिए भाई. क्यों? इसकी बेटी होके तो क्या इसको मल्लूद से शादी करनी पड़ेगी ना फिर उसको. For that to even वो matter. बहन को वो भांजी वाला सीन है ना. बड़ी. हाँ, that is not allowed. तू अपने कजिन्स में देख. What is not allowed? I mean, allowed तो कुछ भी नहीं. By the way, free power, water, travel, and more Delhi subsidy bill up 600% in 10 years. I don't give a shit. I've just opened up Economic Times. Why don't you give a shit? You have to pay these things. He doesn't pay tax ना. इसका tax तो आना भी तो चाहिए ब्रैकेट में. बेटे. अब पर ये 10 साल में तेरे को नहीं लगता तेरे टैक्स ब्रैकेट में I will आएगा give a भोसड़ी shit के? then. Then I'll give a shit. अभी क्यों दूं shit? दोपहर का टाइम है मैं shit दे चुका हूँ. बहुत अच्छा लगा मुझे. Oh God. मुझे वैसे पता क्या लगता है. हाँ. ये जो अभी इसके बहन की बेटी वाला जोक मारा हमें वही कट कर देना चाहिए पॉडकास्ट. खत्म एपिसोड. बहन की बस हमारा टाइम ही नहीं हुआ पूरा. वो तो गया. कितना टाइम हुआ है? नहीं बीच में इस पे कटिंग It's वटिंग होगी. 6:20. There's going to be cutting in that. हाँ तो 50 मिनट का एक एपिसोड होगा. तेरे बाप का क्या जाएगा. हमेशा तूने 1 घंटा 1 घंटा 10 जरूर करना है. 70 मिनट क्या है. छोटे एपिसोड भी थोड़े निकाल सकते हैं. शॉर्ट स्वीट इंटेंस गुड. India can get going. Will Sitaram make roti, kapda, makan affordable again? माँ की चूत. नहीं, I don't like it. Sitaram is not gonna do shit. It's not enough. I don't think. You got to do like one last big bit and then fuck off. Okay. Hello. करना फिर बिट. शुरू हो जा. तो करना. Man shoots daughter in front of cops
Panchayat days before her wedding. This is your last bit. Yes. 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 Let's talk about this. The daughter Tanu Gurjar, of course, Okay. had publicly opposed the marriage arranged by her family, expressing her desire to marry a man of her own choice. What a bitch. Now we've spoken about women with mental illnesses. How can she हरियाणा में ये disrespect? सोच कैसे सकते हो? How can she disrespect her father like that? She's got to be retarded, dude. How did she think she'd get away with this, by the way? That's the real mental illness. How did she think she could have a life? Stupid cunt. Her wedding was 4 days away, but her father shot her dead because she wanted to marry someone else. Good. You gotta teach them a lesson. You gotta set an example. उसके आगे 3 और बहनें हैं, डॉटर हैं, ठीक है? वो भी ऐसा कुछ सोचने तो लगे. एक कम डाउट And now- वो भी सोचने लगे कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन बन जाऊं. No. Fuck out of here. तेरी शादी तेरे मामा से होनी है तो Correct. होनी है. This shocking murder took place in Madhya Pradesh, Gwalior, where a man shot and killed his 20-year-old daughter in front in of police. Madhya in Gwalior. Gwalior. Okay, no, but पंचायत क्यों लिखा है? Gwalior में भी in front of The पंचायत. police and panchayat. But Gwalior is a city. पंचायत is a village level governance body. अरे पुलिस लोकल मतलब पंचायत के सामने ऑडियंस के लिए चला गया. ऑनर किलिंग. क्लैपिंग कौन करेगा? हाँ. True. पंचायत में ऐसे बुजुर्ग पुराने आइडियाज वाले लोग यार मिले हैं वो तेरे मर्डर अगर हम देख लेते हमें एक थोड़ा रेफरेंस मिल जाता. को. हाँ. वीडियो के लिए कुछ आइडिया मिल जाता. करा लेंगे फुटेज कहीं से निकाल लूंगा मैं बात करता हूँ पंचायत के लीडर को. सरपंच को फोन करते हैं. सरपंच जी जरा आईफोन का सरपंच हमारा फुटेज फ्रेंड है ही वैसे, है ना? करेक्ट. गाने वाने भी गाते हैं वो भी. सरपंच वाह बड़ी कलोली है ना उसका गाना. The killing unfolded Tuesday evening around 9 p.m. in the Golaka Mandir area of the city. Victim's father Mahesh Gurjar, allegedly enraged by a video of his daughter posted on social media earlier that day. Oh God. What is she doing in the video, bro? छर्रे उड़ा रही होगी. अबे कुछ नहीं यार. This is even if she's holding hands with the guy, it's more than enough for him to kill her. अबे साथ में फोटो भी अगर दोनों की But ऐसे होगी. also, bro, now these have you seen these social media of these chapris, the social media videos? वो एक अपने मुंह में चाय डाल के फिर अपने बंदी के मुंह में अपने मुंह से ही चाय डाल रहा है. हाँ वो बहुत They ही might be doing all of that disgusting shit. Oh shit. Because they shoot this inside Delhi metro and stuff. Fuck! I'm just worried about the other passengers. फिर तो in the किल कर back. फिर तो शायद मर्डर Disgusting, bro. It is जायज है. fucking जायज है. फिर तो disgusting. मर्डर जायज है. देख, I mean, fucking I disgusting respect your shit. individual autonomy in wanting to marry somebody else and all, but if you're making those videos, then you should Then get you die. marked. Yeah, You yeah. die in front of the panchayat and the police and everybody Yeah. claps. End of story. Easy. That's pretty. Yeah, that's sorted. And now that she's learned her lesson, she won't do it again. You Yeah. know? So I mean, I think everyone wins. The man she referred, so she's posted in her video, I want to marry Vicky. My family initially agreed but later refused. They beat me daily, threatened to kill me. Listen, Take the message. yeah, get the hint. Yeah, man. Bitch. Stop If something being so happens to me, my rebellious. family will be responsible. Tanu said it. She's asking for it. She's asking for it. And then the man she referred to, Bhikam Vicky Mawai, is a resident of Uttar Pradesh, Agra. एक तो आगरा में बैठा बंदा. Match बनेगी ही नहीं. ये long long distance- distance करने को यार these Long distance idiots. doesn't work. You gotta have a regular sexual intimacy. Yeah. You know. So That was very strong for a yeah. yeah, immediately, very immediately. That was Quickly, very convicted. yeah. Yeah. But long Yeah. distance doesn't work. Doesn't work. Yeah. He's given it Yeah. a shot or two. Yeah. Rubbing him out Correct. because that's the only And, thing. and trying to reach the wall. Long distance relationship. They had been in a relationship for 6 years. So this guy's a pedophile. Wow. 20 साल की औरत है ये तो 14 साल की उम्र से तो वो कितने साल का है? मुझे who knows who cares pedophile हो बंदा. Correct. Her father was probably in the Easy. right by killing her instead of him. Even though he is the pedophile. I mean, it makes sense because Okay, because he can't hurt her anymore. He This can't, is, he can't this, take is, this is advantage what I of her wanted. I anymore. just wanted to be an asshole quickly, funnily for one last bit, and now I'm done. I'm satisfied. That's it. That's it. That's Yeah, you, done. You want to continue? You can go. Yeah. You can go longer if you want. Save the pedophile. Didn't you want a dictionary or some shit, dude? You want Yeah, to? man. He texted me today. आज मेरे को डिक्शनरी खरीदनी है. ये पता क्यों भेजता है ऐसे मैसेज मेरे को ताकि मेरे को याद रहे क्योंकि इसका दिमाग में नहीं रहता याद. He texts me. But- तो डिक्शनरी खरीदनी है मतलब क्या? जो ऑर्डर करना? No, I'll go to Midland over here. I'll take a look. It's the- If they have whatever. I told him you don't have to go to Midland to buy a dictionary. You can get डिक्शनरी it at a stationery store, dude. Book store में नहीं जाते हैं डिक्शनरी खरीदने सिर्फ. But मिल सकता है वहाँ पे. ब्लिंकिट में मिल जाएगा भाई डिक्शनरी. Hindi English. इसको हिंदी से इंग्लिश चाहिए. He's Oh shit. yeah. So that's what I said. Let me stop by take a look. Amazon.
कल अबे सुबह मैं घर यहाँ पहुंच जाएगा हूँ। अरे मैं जाके जाके दुकान में देख देख लूंगा लेंगे, गेड़ी यार। मार लेंगे, मेरे को भी जाके अपने ब्रश चल लियो 200 अपने मीटर पेन- मोटे। मेरे को पेन सर्विस कराने हैं। हेलो हाँ, मेरे चलो। को मोटा मत बोला हाँ टू लेट। उधर बैठा हुआ है वो गुस्सा हो जाएगा 2 लोग मोटे उसको गेंडे मैं अभी बुलाऊंगा वजन ना। पे खरीदने वाला हूँ, तो टेंशन मत ले। ये गेंडा है तू मैं मोटा लिटरली है। फिगर आउट कर रहा हूँ, आई एम ऑन इट। हाँ हम गेंडे हैं। गुड नाइट फोक्स।